गुड इवनिंग दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था आज अपनी दूसरी किस्त लेकर आने की डी डॉलराइजेशन पर, जो हमने एक श्रृंखला शुरू की हुई है। और तो हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत हमेशा की तरह, और बसु भाई। महेश जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट हेल्प इट। तो इसमें हम लोगों को देखना ही होगा। आज की श्रृंखला में जो बात शुरू करनी है, आपने सुना होगा कि डी डॉलराइजेशन पर हम बात चला रहे हैं। तो यहाँ मुद्दा अब शुरू हो रहा है। बस वही आपसे बात आज की शुरू करेंगे, और उसमें ये कि व्हाई व्हाई इज डी डॉलराइजेशन important, why it is necessary to have it de-dollarized economies. Okay. So first of all, good evening to all the viewers, and thank you, Mahesh ji, for having me back on the show. So the question that you asked me is a very important question. The question is that why is de-dollarization important? Right. So you see, ever since the Bretton Woods Agreement of 1944 in New Hampshire, in the US, the world accepted the US dollar as the reserve currency. Right. In other words, in simpler terms, the world accepted the US dollar as the banker of the world. जहाँ पे जाके हम लोग अपने पैसे रखेंगे, with the guarantee that the US will act as a responsible banker. However, over the years, what has happened is that US has used and abused and misused this privilege of being the banker to the world to sanction whoever and whatever they do not like. Right. है, एक बैंक का काम क्या है? एक बैंक का काम निष्पक्ष होना चाहिए. They should not be in a position to judge whether you are right or wrong, because money should not be economics or finance should not be intermixed with politics. Yeah. So you are supposed to keep you are the banker. You shoulder a big responsibility. You are supposed to take everybody's money, keep it safe, and then give it back when they require it. Yeah. But the US has not done this. The US has sanctioned any country and every country that they thought is a threat to their hegemony. So अब देखिए, वेनेजुएला को उन्होंने सैंक्शन किया था, and because of the sanctions, people in Venezuela died, not because of a war, but because of malnutrition, because of hyperinflation. The hyperinflation also. Sorry? Hyperinflation also. Hyperinflation, yes. The same thing has been repeated in Syria. आप सोचिए कि कैसा देश है, एक देश में earthquake हुआ है. They are in dire straits. Yeah. Yet the collective West, especially the US, decided that they are not going to send any aid. Yeah. Why? Because Syria is a sanctioned country. So this script has been repeated over and over and over and over and over again. Yeah. Some of the countries were smart, and they found ways around the sanctions. One big example is Iran. Iran, even though they have been sanctioned, they have found ways to not only avert the sanctions but actually flourish quite well. उनके घर के मामले थोड़े
matlab, they have inflation at home, but that has not stopped them from innovating. As we have seen in the war, these Shahed drones that Iran supplied to Russia would not have been possible if they had not been able to avert the sanctions. True, very true. Right. There's an important point about Iran. This is the same country जो barbed wires के लिए beg कर रहे थे to the international community, और आज की डेट में they have truly become self-reliable, especially in defense. Yes, completely. After China, after Russia and China, they are the only country who have access to hypersonic missile technology. No, North Korea as well. Yeah, no, yeah. And So, in fact, go ahead. Okay, sorry. So Iran, while supplying the Shahed drones to Russia last year, they said that we have mastered the art of sanction evasion. Right, and we are teaching the Russians how to do it. Good one. Okay, so the other country which has masterfully avoided the sanctions is North Korea. To a very large extent, because North Korea के सर के ऊपर China का हाथ है और Russia का भी हाथ है. Same. But at the same time, one has to also understand that there is a system within North Korea. Most people don't talk about this or know about this, that they have been consistently winning the maths Olympiad over year after year. Okay. I do not want to sound like a North Korea apologist, but at the same time, credit should be given where it is due. Yeah. And they have been able to make missiles that can reach the US mainland. So, but these two are exceptions. The other countries which the US have sanctioned have seen famine, hyperinflation, like people dying because of malnutrition, and the point is that that US is going to continue doing this as long as they hold the power of the reserve currency. That's right. And that is why the dollar has to die as the reserve currency. It has to die. It is very important for the good of the world. So, like I said, that जिसको वैसे नाम corrupt banker देना चाहिए था, corrupt policeman नहीं, लेकिन वो policeman की तरह ही काम करता है. सही, बिल्कुल ऐसे ही है. तो वो अगर corrupt है तो पूरा system ही corrupt है. बिल्कुल. We need a completely new system which is not in powers, not in the hands of one power. It has to be distributed. Correct. अभिजीत? मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि आप देखिए दो पहलू हैं. सबसे पहला पहलू ये है कि आज की डेट में रिजर्व करेंसी की वजह से हाउ रिजर्व डॉलर बीइंग द रिजर्व करेंसी allows US to print endless notes. पहला ये है. और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो कैसे दूसरे मुल्कों में आता है. देखिए आप एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि जितने ज्यादा डॉलर सर्कुलेशन यूएस में है उससे कहीं ज्यादा पार्क्ड आउटसाइड है. ओके. फिर उसका यूज किया जाता है ट्रेजरीज बॉन्ड को खरीदने के लिए, जो कि कुछ नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स. राइट. और जितने का आपने खरीदा है उतना आपने उनको और भी मौका दे दिया कि चलो कुछ नहीं, इतने नोट्स तो आप और ज्यादा प्रिंट कर सकते हो. सही बात है. उसके बाद फिर से वो डॉलर को यूज करते हैं स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जिन कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है. देखिए बहुत क्लासिक एग्जांपल है चाइना का. मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रॉब्लम होती कैसे. आप दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं अगर आप डॉलर को चाहते हैं कि कमजोर हो जाए. हालांकि अभी भी ये दूर की कौड़ी है और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हो नहीं सकता है.
जो सबसे ज्यादा इनकी सिंथेटिक डिमांड है जिसकी वजह से डॉलर एग्जिस्टेंस में है, वो ऑब्वियसली है द वे इट इज इंटरट्वाइंड विद एनर्जी मार्केट। तो वो एक एस्पेक्ट है जहां से आप एनर्जी मार्केट से अगर डॉलर को स्लोली स्लोली डिकपल करते हो तो उसके कुछ डेफिनेटली आपको परिणाम दिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि सब चाइना और यूएस का जो ट्रेड है उसमें बीते लगभग लगभग 25-30 सालों से जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ट्रेड डेफिसिट में है। और चाइना जो है, चाइना की जो ग्रोथ है ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के बेसिस पे है। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हैं, आप अमेरिका को भेजते हो, अमेरिका आपको डॉलर भेजता है, उसके बाद आप डॉलर तो पे नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है आप युआन में पे करोगे। तो जिन बंदों को डॉलर मिलता है वो पीपल बैंक ऑफ चाइना को देते हैं। जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है वो उतने ज्यादा युआन प्रिंट कर देता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक्सेस ऑफ डॉलर हो गया ना, इस डॉलर को चाइना अपने पास पार्क करेगा और करेगा क्या, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाली तुम्हारा डॉलर पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा बेटर है कि ट्रेजरी बॉन्ड ले लो, कम से कम कोई रिटर्न तो मिलेगा। एंड जैसे ही आपने ट्रेजरी बॉन्ड लिया, आप बेसिकली जो उनका डेफिसिट है, जो उनका डेट है, आप उसे फाइनेंस कर रहे हो। मैंने आपका इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि आपको जो चीज अदरवाइज मुझे आपको देनी है, आप कर्जे में हैं, तो मैं वो चीज आपको ना दे करके आपसे कोई चीज वापस से खरीद ले रहा हूं और आपको फिर से मौका मिल गया, आप फिर से नोट छाप रहे हो और वो एक टॉक्सिक सर्किल वो कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है। इस तरीके से आप देखें बेसिकली युआन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है ना, तो अगर कभी भी ऐसे सिनेरियो में जब किसी भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसे कंपैरेटिवली it has to become stronger, but then again here comes the people bank of china and they start currency manipulation so that जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते रहें। सही। और ये जो करेंसी, हाँ, टू कीप द करेंसी डाउन, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप एक टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है तो आज नहीं तो कल आपके जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग विद द रूबल। एक टाइम पे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि जो उनका एक्सपोर्ट है वहां पे उनको अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती, तो उन्होंने मैनिपुलेशन किया। आज आप वो देखिए वो फिर से नीचे चली गई है। सही। तो अब चक्कर क्या है, मरता क्या ना करता वाली चीज है। आपको एक्सपोर्ट भी अपने हाई रखने हैं, एक्सपोर्ट सस्ते रखने हैं, तभी आपके पास डॉलर्स आएंगे। और अगर आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उनको रखे रहिए फॉरेक्स रिजर्व में, जाहिर सी बात है कुछ रखेंगे, दूसरा आप उनके ट्रेजरी बॉन्ड लेंगे। जैसे ही आप ट्रेजरी बॉन्ड आप उनके लेते हो, उनको फिर से खुला हाथ मिल जाता है छापने का। बिल्कुल। तो अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि अच्छा ये तो चलिए चाइना के साथ है, ऐसी और भी कंट्रीज हैं। अब चाइना किसी को सामान देगा, बिकॉज अगेन डॉलर रिजर्व करेंसी है, चाइना किसी से सामान लेगा उसको वो डॉलर में देगा, थोड़ा डॉलर वो अपने पास रखेगा, वो फिर से ट्रेजरी बॉन्ड लेगा। सही। तो ये एक टॉक्सिक सर्किल है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसकी शुरुआत यहां से हो सकती है कि जो हाई वैल्यूड कमोडिटी है और जो फ्यूल है इसको आप डिकपल करो पहले डॉलर के साथ। सही। ओके। That process has already started. That process has already started, and Okay. it can only, and it only pick up speed going forward. यस यस यस। और ये जितना ज्यादा तेज होता जाएगा, जितना ज्यादा तेज, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये चीज बात करने में बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन अभी इसके रियल रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। और टाइम भी तब लगेगा जब प्रॉपर जो जितनी भी कंट्रीज हैं ये पहले इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि डॉलर एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो एक ग्लोबल बैलेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स है ये उसके लिए प्रॉब्लम है। सही। अगर इनके पास ये फ्रीडम नहीं होगी टू प्रिंट एंडलेस डॉलर्स, दे कैन नॉट फाइनेंस द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। और द मोमेंट यू स्टॉप फाइनेंसिंग देम, आप किस बेसिस पे, आप जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसी के बेसिस पे तो आपने सऊदी अरेबिया को क्या रखा है कि अच्छा ठीक है जो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारी है।
हमारी हो गई, हाँ बिल्कुल। हाँ, उसी के बेसिस पे तो आप यूक्रेन में एंडलेस जो एक ब्लैक होल है सप्लाई यूक्रेन, बनाई हुई वहां है। पे आप आर्म सप्लाई करते जा रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये प्रॉब्लम अनचेक्ड है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम बेसिकली। आई एग्री। अगर एग्री। इसको आप एड्रेस करते हैं, डेफिनेटली इट कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन अ डे और इन अ ईयर, लेकिन अगर आप इसको एड्रेस करना शुरू करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और आप अगर देखो अभी तक जो यूएस मीडिया हाउसेस हैं या जो वहाँ के सेनेटर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे डिड नॉट रियलाइज बट लेटली दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दिस, बिकॉज इसका क्या मतलब है? अगर दो, आप ऐसे देख लीजिए, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो मैकेनिज्म हुआ है, अगर ये पूरी तरीके से डॉलर्स को एलिमिनेट कर देता है तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 19 बिलियंस ऑफ डॉलर्स डम्प्ड इन द मार्केट। अब अगर इससे ट्रेजरी बॉन्ड नहीं लिए जाते हैं तो ये 19 बिलियन जो होंगे वापस चले जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, बिल्कुल। सर्कुलेट होंगे, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन। वैल्यू कम होगी, इन्फ्लेशन बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। तो अगर एग्जैक्टली तो जो बड़ी कंट्रीज हैं जो छोटी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही हैं, अगर उनका सपोज कीजिए ट्रेड डेफिसिट है भी, तो दे शुड ट्राई कि मैक्सिमम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर ले वो, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट कैन बी डन इन डॉलर्स। लेकिन जितना विदाउट डॉलर इट इज पॉसिबल, दे शुड डू इट। राइट। बिल्कुल ठीक। बासु, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन टू इट? So yes, this process has basically started. देखिए, अभी मुद्दा दो है। एक तो वैसे there is a hot war going on, and there is every possibility that that hot war can escalate into a hotter war. I think the major global powers who are like, say for example, Russia and China, they want to contain the hot war within the borders of Ukraine, and they do not want this war to spill over to other places. Other countries. डेफिनेटली। Uh, but at the same time, this 1 year they have been doing a tremendous amount of outreach to African and Latin American countries, as well as Asian countries. They have been trying to convince them to finally remove their colonial shackles and move forward. इसका इसका आप देख रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि और भी होगा। देखिए, केनिया is a very small country and a very big player in world economics, but they are going to buy oil from Saudi Arabia, सऊदी who is अरेबिया विदाउट an डॉलर्स। ally of the US, in Kenyan shillings. This is an outright this is as good as a clarion call of a revolutionary call. मतलब ये अगर सोचिए कि दिस इज लाइक, एक जमाने में जो जैसे वो इनकलाब जिंदाबाद हम बोले थे, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट इन इकोनॉमिक टर्म्स. Very true. A country like Kenya buying Saudi Arabian oil, which is an US ally, with Kenyan shillings, and Saudi Arabia agreeing to it, is nothing short of revolutionary. Yes, yes. I was just looking at another data that Senegal about to grow this year at 8%. At a time where the whole world is going into inflation, they are going to grow at 8%. It's Yes, crazy. yes. So this is still a developing story. There is a lot going to that. There is a lot that is going to come. There is and almost every day you hear something. Say for example, today I just read that Macron, after his visit to China, has come back to France and made a statement that is unthinkable. That was unthinkable a year back. What is this statement? Definitely. He has said that Europe should not become America's order takers. Wonderful. This is big. This is big. और एक चीज उन्होंने और बहुत दबी जबान में कहा कि
दूसरे देशों की ज़मीन पे अमेरिका को जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उन्हें पार करना बंद करना चाहिए। हुँ, Yes. हुँ, आप हुँ, देखिए, जो बंदा दबी ज़बान में ही कह सकता है, लेकिन अब ये कहना अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, स्पेशली जब आज की तारीख में पूरा फ्रांस जल रहा है। हुँ, बिल्कुल, इन बड़ी बात है। लोगों को पता है कि ऑर्डर जो रिसीव करने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हुँ, एंड दे आर पेइंग फॉर इट। बट देन अगेन हाँ, आई लिटरली डू नॉट नो देयर कंपल्शन कि चलो आप ना ना कहो, आप ड्रैग हुँ, करो, उसे अवॉइड करो। सही। हुँ, हुँ, वो चीज भी हुँ, नहीं हो रही है। तो जैसा अभी बासु ने कहा कि स्लो प्रोसेस है, बट यस इट इज हैपनिंग। बट एनीवे बासु, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन टू अवर व्यूअर्स कि हाउ दिस स्विफ्ट मैकेनिज्म वर्क, और कैसे जो एक स्विफ्ट मैकेनिज्म है, ये भी बहुत बड़ा ग्लोबल रोल प्ले करता है एंड यूएस डॉलर डोमिनेंस। बिल्कुल। सो बस यस, टेक्निकली हुँ, टेक्निकली अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आप स्विफ्ट का पार्ट नहीं है, हुँ, it is also a blow to America ओह यस, and the वेरी मच, hegemony of the dollar. So I would request Basu to explain it to our viewers. यस, So जी Swift बिल्कुल। is a community owned, again, the Swift is a community owned system which allows for secure transactions to happen between different entities. हुँ, हुँ, मतलब पैसा तो एक जगह से एक जगह हम ट्रांसफर नहीं करते। सीधी सी हुँ, बात है कि हम बोल देते हैं कि भैया उसने मुझे, जैसे कि आप सोचिए ना कि आपको किसी से पैसा आपको मिलना है, हाँ, हुँ, और इनको किसी और से पैसा मिलना है, तो हुँ, आप कह देते हैं कि भैया हम उससे पैसे ले लेते हैं, तुम उससे पैसे ले लो। बिल्कुल। हुँ, हुँ, So this हुँ, is the simplest way to explain the Uh, Swift messaging system. So every bank has a Swift code. हुँ, So when they check their balance of payments, they say that okay, मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, भाई तुम उसके साथ adjust कर लो, हम इधर adjust कर लेते हैं। हुँ, This is the basic हुँ, way. This is the very basic fundamental. This is the fundamental principle on which the Swift system works. ओके, Now Russia was outed from the SWIFT system as last year when the सही war सुन started. या हुँ, हुँ, Iran has not been allowed to use the SWIFT system for a very long time. There are plenty of other things, other entities, whether it be uh, governments, organizations, people. So, it, so the US basically uses SWIFT as a system to financially cripple whoever they want. exact. हुँ, 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 However, ओके, now what has happened is China has developed their own system. हुँ, हुँ, CPCI. Russia has developed their own system. India is also developing. India has also basically developed its own system. हुँ, हुँ, Even the ASEAN has developed their system. Latin America is doing that. The same thing will happen in Africa as well. All of these systems will slowly but surely get integrated. अब देखिए या ना, कुछ दिन पहले even the ASEAN countries, they agreed with amongst themselves that we will not use the dollar in our trade. हुँ, The इनफैक्ट जो information ये मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनका प्राइमरी कंसर्न था आसियान की मीटिंग में, वो यही था कि हाउ टू डी डॉलराइज आर इकोनॉमी, आर हाँ, ट्रेड। हुँ, हुँ, although गो अहेड बस ASEAन has a very important US ally, which is Singapore, या यस। and ट्रू, Singapore is the only Asian country or ASEAN country which has no, apart impose from Japan, sanction on Russia, impose sanctions who on has Russia. sanctioned Russia, हुँ, 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 but they are also de-dollarizing. हुँ, सो द So प्रोसेस इज़ वेरी मच आप ऑन so the flavor of de-dollarization is in the air right now. Everybody is, it's a beautiful fragrance that everybody is taking in. या एक्चुअली 10 साहब, मैं आपको बताऊं, जो असली पॉपकॉर्न है वो ये है। सही, बिल्कुल ठीक बात आई मीन है। नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, आई मीन, बट रियल पॉपकॉर्न इज दिस डीडॉलराइजेशन, बिकॉज इट इज स्लो। एंड आप ये चीज आप देखिए कि जो
unprecedented reapproachment that has taken place between Iran and Saudi Arabia. Oh yes, oh और yes. अगर आप याद करें कि पहले भी हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी कि अगर इनके बीच में रिअप्रोचमेंट होगा तो जो यमन वॉर है दैट वुड आल्सो बी एड्रेस्ड। Yes. and यमन that is वॉर being में ब्रिटेन, addressed. हाँ यमन वॉर में ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, Hmm. इंक्लूडिंग द फाइनेंसिंग, द मिसाइल्स, द प्लेन. Hmm. It has also got a lot to do with the de-dollarization. Hmm. 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 और आपको एक चीज और बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो Hmm. ऑब्वियसली ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस हैं, लेकिन Hmm. उसके बावजूद उनका जो फॉसिल फ्यूल ट्रेड है यूरोप के साथ वो बढ़ा है लेटली. Hmm. Hmm. Interesting. एंड यू Europe नो, does not have anything. Europe does not have anything. Apart from a little bit of agriculture and industrial capacity, they do not have any resources. They don't have Hmm. iron, they don't have gold, they don't have any resources. In fact, the only recent discovery of a resource a resource that can be used has been discovered in Serbia, for all of all the places, and That that is means lithium. Serbia. And Serbia is like umbilically linked to Russia. रशिया. Yeah. यस. Hmm. मतलब Yeah. अगर उधर भी जाएंगे तो सर्बिया बोलेंगे कि नहीं भाई, आपको आपको हम Hmm. इधर आने नहीं देंगे. So everybody is, so the thing is, मैं जो बोल रहा था पहले, I digressed. So the objective of China and Russia is to contain the hot war within Ukraine while Hmm. steadily waging a financial war on the US, and they're doing it beautifully. They're Hmm. doing it beautifully. There is this Chinese warfare doctrine. Hmm. That doctrine is all about financial warfare. They have been thinking about this for a very long time. Yeah. They have Hmm. been thinking about this for a very long time, and now the time has come that they are implementing it full throttle. तो देखिए, एक एक साल में एक पहले साल में कोई कुछ नहीं बोला, Hmm. चुपचाप हर कोई बैठा रहा, Hmm. देखता Hmm. रहा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है. Hmm. And Russian Foreign Minister Sergei Lavrov extensively toured Africa last year, Hmm. and just before meeting President Xi, he Hmm. held a Africa Russia summit. Then Hmm. अभी ब्राजील और चाइना के साथ तो देयर इज अ बायलैटरल करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट हो गया है. सो Hmm. आप देख रहे हैं, अगर आप इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, Yeah. एवरी they have the pulse of every continent. Yeah. Very true. Very true. And now if America wants to wage a war, they have to, if they want to escalate the war, Hmm. that is what they are good at. So if they Hmm. want to escalate the war, they have to fight on multiple fronts. तो फिर Do you उनको guys? ब्राजील के साथ भी लड़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल. उनको अफ्रीका में जाके अभी केनिया के साथ लड़ाई करना पड़ेगा, चाइना के साथ लड़ाई करना पड़ेगा, इंडोनेशिया के साथ लड़ाई करना पड़ेगा. हर कोई तो बोल रहा है कि भाई हम डीडॉलराइज कर रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि Hmm. छुप छुप के कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं. बिल्कुल. They have no बिल्कुल. fear. The fear factor is gone. Yeah. 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 एंड Okay. यू नो, व्हेन द फियर फैक्टर इज गॉन, Hmm. then the respect and command is also gone. Oh yes, very much so. Yeah. One of the viewers, Sirish Deshpande ji, is saying that only resource of Europe was loot from their colonies in Asia, True. Africa, and America. Yeah, so makes sense. Yeah. आप So, अभी भी देखिए कि जो असली कॉमोडिटी है, hmm, जिसकी एक्चुअल में वैल्यू है, वो hmm, सबसे ज्यादा रशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है. बिल्कुल ठीक बात. बिल्कुल, और एब्सोल्युटली. उसके बाद जो Hmm, इन कॉमोडिटीज को, या जो hmm, मेटल हैं, जो जो रेयर hmm, अर्थ हैं, hmm, इनको मेन स्ट्रीम में लाना,
इनको इंडस्ट्रियलाइज करना और इनको हुँ, ऐसी सप्लाई चेन का पार्ट बनाना जहां से आप मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट ले सको, वो चाइना हुँ, के कंट्रोल में है। बिल्कुल, आपको ऐसा ही और है। एक आपको आपको और एक मजेदार बात बताता हूँ। जी। आप देखेंगे, आप अगर न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हर हर हफ्ते कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। Yesterday, ये बात India सही है, found ठीक बात है। rare earth metals. हुँ, बिल्कुल, ये बात सही है। कुछ दिन पहले पिछले there was a huge lithium reserves have been found in Iran, हुँ, बिल्कुल, right? वो हमारी तो बाद में हुआ था। अभी even in Africa, I forget the name of the country. They also there have been some discoveries. आप अगर सोचेंगे तो ये क्यों हो रहा है? हुँ, ये आप ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल suddenly they have started discovering these things. They हुँ, had discovered it, but they हुँ, kept quiet. हुँ, हुँ। They were नाउ इट्स waiting for द the टाइम, right time to announce it. या नाउ अभी इट्स द क्या टाइम। है? They know that even if they announce it, the dirty hands of US cannot touch them. दैट्स ट्रू। That's why everybody is coming out with their discoveries. और आप आई डू। देखिए अमेरिका अभी अंगूठी चूस रहा है। और आप उनके हाथ में आज की तारीख में इतना ही है। कुछ दिन पहले एडमिरल घोष को जो है, कुछ दिन पहले हुँ, 3-4 दिन पहले की बात है, एडमिरल घोष को वाज एट जेद्दा पोर्ट हुँ, एंड अमेरिकन्स आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि जो हुँ, सीआईए के चीफ हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे चिल्लाते हुए, ब्लैबरिंग दिस इज नॉट डन, यू हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। हुँ, और कल उन्होंने जो टोमाहॉक पावर्ड सबमरीन, टोमाहॉक क्लास सबमरीन है वो भेज दी। हुँ, और एक बहुत ही हाँ, अब मुझे ये नहीं पता इस चीज में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, हालांकि अल जजीरा ने इस चीज को पब्लिश किया था, जो कि हुँ, पूरी तरीके से कतर गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। हुँ, तो 2018 में अराउंड 103 टोमाहॉक्स जो हैं वो फायर की गई थी सीरिया पे, जिसमें अराउंड 71 ऑफ देम वर इंटरसेप्टेड, विच इज अ बिग डील। ओह! ओह! तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज की तारीख में आप टोमाहॉक से लैस सबमरीन भेज रहे हैं, हुँ, आपके गले में ऐसी हड्डी है कि अगर आप मिसाइल फायर करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, हुँ, और नहीं फायर करेंगे तो फिर आप, इस पोस्चरिंग की आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वैल्यू नहीं है। दिस इज अ हुँ, कंप्लीट आप कैच 22 तो सिचुएशन। इनके पास ये है कि या तो ये एस्केलेट करेंगे और हुँ, या तो नहीं एस्केलेट करेंगे। नहीं एस्केलेट करना इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हुँ, मत आई मीन जाहिर सी बात है ये एस्केलेट करेंगे। तो इफ दे हुँ, डू नॉट एस्केलेट इवन देन दे आर लूजिंग, एंड इफ दे आर एस्केलेटिंग इवन देन दे आर लूजिंग। हुँ। तो जो एक ऐसा आज फेज होता है ना कि बिल्कुल। गली की हड्डी है ना, उसे निगला जा सकता है ना थूका जा सकता है, ये उस फेज से भी ऊपर जा चुके हैं। तुम आज आज कुछ इस थूकोगे तरह की तब भी खबरें आई फायदा हैं। नहीं होगा, निगलोगे तब भी फायदा नहीं होगा। ठीक कह रहे हो। आज कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि मिडल ईस्ट में ईरान के हालात को देखते हुए इन्होंने कोई न्यूक सबमरीन भी लगाई है यहाँ पर मिडल ईस्ट में। मैं उसी की बात कर हाँ। रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है ये, आप वहां पे जा रहे हैं, या तो आप एस्केलेट करिए। आप हुँ, एस्केलेट करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, नहीं बिल्कुल। एस्केलेट करेंगे तो वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग देम सीरियसली। वरीड अबाउट यू, नोबडी इज़ वरीड अबाउट यू नाउ। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। अभी आज पिछले 2 दिन से वो ये भी थ्रेटन कर रहे हैं कि भई इफ नीड बी विल पुट द फीट ऑन ऑन ग्राउंड इन चाइना एंड बेसिकली अगर ताइवान के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो इफ अब चाइना मैं आपको कुछ ये देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि एस्केलेशन करें, एंड आई डू नॉट थिंक सो कि चाइना इज गोइंग टू फॉल इन द ट्रैप। चाइना ये एसेस कर रहा है कि आप देखिए कि चाइना जो है वो रिकॉर्ड अमाउंट में जो स्टील है दे हैव बीन बाइंग फ्रॉम रशिया। हुँ, हुँ। और आपको पता है कि स्टील का यूज किन किन चीजों में होता है। अब हुँ, आप ये देखिए कि एक चाइना ये एक्सेस कर रहा है कि जो हमारे आर्म्स का स्टॉक है और जो यूएस के जो आर्म का स्टॉक जो डिप्लीट हो रहा है, जैसे ही वो कन्वर्ज करेगा, हुँ, एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा, उसके बाद हुँ, चाइना विल एस्केलेट इट। उसके पहले भी हुँ, आप देखिए, कुछ दिन पहले जैसे रैंड कॉर्पोरेशन है, इनका इन हाउस थिंक टैंक, आई वुड नॉट कॉल इट थिंक टैंक बट प्रोपेगेंडा हाउस, वैसे हुँ, ही सीएसआईएस है। और ये सीएसआईएस वही है जिसने
बाइडेन के आ जाने के बाद से इन्होंने एक पेपर लिख करके पब्लिश किया था कि हमें सब नेशनल डिप्लोमेसी इंडिया में प्रमोट करनी चाहिए, जहां पे हम स्टेट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वहां के लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें रादर देन गोइंग थ्रू दिल्ली। तो ये सब नेशनल डिप्लोमेसी वही है जो इन्होंने कभी सर्बिया में की थी, ये वही सब नेशनल डिप्लोमेसी है जो इन्होंने बहुत कुछ पहले 2000 के करीब बेलारूस में की थी। हालांकि वो फेल नहीं हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन इनके पास लेसन थे। फिर इन्होंने वही सब नेशनल डिप्लोमेसी जो ट्राई की थी वो कीव में ट्राई की थी, और वहां पे अब उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इन्होंने वॉर गेम्स की एक्सरसाइज की थी, और उस वॉर गेम्स में इन्होंने ये पाया कि ऑल्दो हम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो डैमेज है वो इन्फ्लिक्ट करेंगे चाइना पे, लेकिन जो हमारी ओवरऑल मिलिट्री सुपीरियरिटी है, स्ट्रेंथ है, फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय चाइनीज मिसाइल्स। और अच्छा खासा वक्त लगेगा हमें उस चीज को उबर पाने में। अब प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाइट हाउस को चला कौन रहा है। We can be sure of the fact that it is not Joe Biden who's managing the White House. और अगर आपको याद हो कि पुतिन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं वो काले सूट और टाई में आते हैं, सूटकेस लेकर के, ब्लैक सूट में, और सूटकेस लेकर के आते हैं, वो मैनेज करते हैं। सो द फैक्ट इज दे नो द पीपल दे हैव टू डील विद। यस, ऑफ लेट तो फॉक्स वगैरह में जो खबरें आती हैं, आई डोंट नो हाउ टू बिलीव इट और नॉट, बट देन एग्जैक्टली। अमेरिका में ये बात कही जा रही है कॉन्स्टेंटली कि भाई अमेरिका स्टार्टेड रियलाइजिंग। इट्स So, ओबामा's third term running. so Carlson did a 14-minute show on this. That's a lot of time to dedicate to this particular subject, and Right. that too by Tucker. Okay. Then And I what think did he also say? NBC did a segment, I think about a 3 or 4 minute segment with an uh, uh, with an erstwhile Fed chairman. I'm not really sure, it was a lady. मैं देखा था लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दिया. But yes, the thing is that even this is being talked about in the US as well. Yeah. In the mainstream media. ये इसके बारे में बातें तो हो रही थी, but only among certain individuals who had a very broad idea about geoeconomics. But now it has come into the mainstream, so they also know that it's probably coming. But now we have turned to basically geostrategy, what we're talking about right now. But how do you connect it with the de-dollarization process? How do you connect that to that? I would first allow Basu to speak on it, then I have something to speak on it, जो कि basically root cause को address करेगा. Okay, Basu. मेरा मानना ये है कि this has been in the works for quite some time. मतलब जो लोग, so how is it that suddenly everybody is on board? How is it that suddenly I mean this cannot be spontaneous. I am not one who believes in coincidences in geopolitics. Very true. Definitely. Very true. This cannot be coincidence. So everybody was intimated about what is going to happen. देखिए, for all their intellectual prowess, Americans are quite dumb. They can be very intelligent in certain fields, but they are very dumb in other things. Yeah. Whereas countries like China, Russia, India are smart, really smart. They have been thinking about this for quite some time. Maybe there is not convergence about the way they want to do it, but all of them are on board that yes, this needs to be done. से आप देखिए कि ब्राजील में बोल्सोनारो को हटाया गया और लूला को लाया गया. ये कहा जा रहा है कि सोरोस के हाथ था.
हुँ, लूला को बिठाने में. लाने में। हुँ, However, once Lula has come to power, हुँ, he has turned against the ones who backed या him. it has actually backfired. बैकफायर्ड Exactly. ट्रू। So he has turned against them. हुँ, What does that tell you? हुँ, That these people do not have that kind of power anymore. हुँ, So Lula on the one hand said, yeah, कुछ दिनों के लिए एंटी रशिया बहुत सारा ये वो बकता रहा. हुँ, लेकिन जब एक चाइना के नेम साथ सेप जो का करेंसी स्वैप का टाइम आया, वो बोला कि हाँ भैया वो है, मुझे अभी करना है ये. Let's do it right now. So I don't know what 90-year-old Soros is doing right now. He's probably pulling out his hairs. I do not रिमेनिंग understand. है। See, I should not be saying this, but why the hell he is not dying? उफ़ नहीं नहीं नहीं, जीने दो. और कुछ दिनों जीने दो. ये अच्छा, उसको देख तड़प के तड़प जाना के चाहिए मरेगा, भैया. तड़प के मरेगा, इसका इसका तड़प के आनंद. मरे Yeah, yes. Let him live. I want him to live. Let him see how राइट। it feels. हुँ, ओके अभिजीत यू वांटेड टू से ये समथिंग अच्छा, या बिकॉज बासु जी ने एक चीज कही थी कि अमेरिकन्स आर डम फॉर ऑल देयर prowess in science, technology, and things. I हुँ, see if there is a country and there are policy makers who think Pakistan can be trusted when it comes to a global war against terrorism. It speaks enough या about their understanding of ground reality and most importantly their understanding of the country Pakistan is. हुँ, वेरी ट्रू, अब आपको वेरी क्या ट्रू। लगता है कि जो वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने आकर के 50 साल जो है वो बिताया पाकिस्तान में और उसके बेसिस पे बोल दिया वी अंडरस्टैंड? नहीं, आपको भी हुँ, पता है एकेडमिशियंस को या जो एक हमारे विल्सन सेंटर में एक मिस्टर ऊगल मैन, आई मीन गूगलमैन, यू नो द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, इनको या फर्स्ट क्लास टिकट्स मिल जाते हैं आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से. आप वहां पे जाइए, शराबे पीजिए, याशी करिए और जो हम चाह रहे हैं वो आप लिख दीजिए. अब इस तरीके के जो लोग लिखते हैं तो जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जो पॉलिसी और अंडरस्टैंडिंग है इन्हीं एकेडमिशियंस के बेसिस पे है. हुँ, And they do not write the truth, they simply write what they think Pakistan is. And most importantly, जो आईएसआई और जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो वो चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान हमारी नजरों में ऐसा है तो आपकी नजरों में भी ऐसा होना चाहिए. तो आप यहाँ पे एक ऐसे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया कि हम इसकी मदद ले सकते हैं टू डिफीट तालिबान इन अफगानिस्तान. आप हुँ, सोचो, भेड़ चराने वाले AK-47 ले करके उन लोगों ने अमेरिका को ह्यूमिलिएट किया बिल्कुल, 10 सालों के बाद. और 20 बहुत क्लियर थे, कह रहे थे घड़ी आपके पास है, वक्त हमारे पास है. बिल्कुल, ऐसे ही घड़ी है। हो सकती है आपकी लेकिन वक्त हमारा है, वक्त हमारा ही रहेगा. अब आती है बात, देखिए जो चाइना और रशिया के एफर्ट्स हैं वो आज के नहीं हैं. फॉर एग्जांपल चाइना ने बहुत ही एक ground breaking role play किया when it comes to the approachment between Saudi Arabia and Iran. At the same time, हुँ, Russia has also been doing a lot of things which are not covered in mainstream media. The fact is, हुँ, uh, Syria has been the relationship with Syria has been normalized by Arab हुँ, countries. राइट, ठीक, इसके पीछे जो सारा रोल है वो रशिया का है. हुँ, And now they are trying to break the ice between Turkey and Syria. The issue is Turkey needs to be convinced that, dude, you need to withdraw your forces from Syrian territory. ओके, हुँ, And if they do it, then जो नॉर्मलाइजेशन है वो और भी आगे बढ़ेगा. अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, हुँ, इस चीज को मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि ये ग्लोबल एनर्जी का IMF है. हुँ, अब बिल्कुल, आप समझिए कि जो चाहे इंडस्ट्री हो, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग, उसकी जो फाउंडेशन है वो एनर्जी है, वो डीजल है, वो पेट्रोल है, वो गैसोलीन है. हुँ, अगर आप पूरा का पूरा एक ब्लॉक जिसे मीना कहा जाता है, MENA, अगर आप पूरे के पूरे ब्लॉक को हुँ, एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हो जहां पे हुँ, उनकी आपस में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ओके फाइन, जो भी सद्दाम हुसैन और लीबिया गद्दाफी ने करने की कोशिश की थी,
Hmm. that now we are not going to take your printed notes. Yeah. Hmm. तो That इस everything is वजह से gone. आप देखिए एग्जैक्टली इस वजह से, और आप ग्लोबल एनर्जी को डीलिंग कर दीजिए, ग्लोबल जो Hmm. मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, कमोडिटीज हैं, रेयर अर्थ हैं, उसको डीलिंग कर दीजिए, एंड देन यू सी Yeah. कल को True. इंडिया अगर बोलने लगे कि हम चावल गेहूं, रशिया Hmm. भी बोलने लगे कि हम अपने चावल और गेहूं, Hmm. सॉरी चाइना भी बोलने लगे अपने चावल और गेहूं, और रशिया बोलने लगे हम अपने गेहूं, या Hmm. डॉलर में नहीं बेचेंगे, या तो हमें आप हमारी करेंसी में दो, वो या कैसे गोल्ड में दो। होगा, ठीक है, आप गोल्ड में दो, आप उनको अपनी करेंसी में दोगे और वो उतना ज्यादा प्रिंट कर लेंगे। हम्म। 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 तो इस वजह से चाइना का बहुत ज्यादा फोकस रहा है लेटली मिडिल ईस्ट, हम्म। नॉर्दर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, हम्म। जहां पे उन्होंने टू द ट्यून्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। एंड द गुड थिंग, आप अगर किसी वहां के पब्लिक पब्लिक से बात करो, दे आर हैप्पी विद चाइना, बिकॉज जैसे कि चाइना का सिंपल सा एक काम है, हम आपके यहाँ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके बेटे का जेंडर एक्स है, आपकी बेटी का जेंडर वाई वाई है, आपकी जो खातून है उनका प्रोनाउन ये है और आपका प्रोनाउन ये है, हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप पॉलिटिकल किडनैपिंग्स कर रहे हो, आप बेतहाशा करो, आप हमारी अपने बला से। दुश्मनों को मार रहे हो, मरो, हमारी बला से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, टेक केयर ऑफ हाँ। आवर इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट। आपने आज तक देखा है चाइना को, पाकिस्तान को लेक्चर देती हो कि अबे भाई तुम लोग अहमदियों के साथ या शियों के साथ क्या कर रहे हो, मत करो, हमारा नाम खराब हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ दिन पहले बिल्कुल। उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान के साथ गैस डील एग्रीमेंट किया हुआ है। खैर इधर I तो will just add one more thing that जी। recently you must have heard in the news that all these OPEC countries are and Russia are cutting down their oil यस, production. प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल। ये क्या है? हम्म। This हम्म। is simply to destabilize the oil market, but या। not for the East, only for the नॉट West. फॉर द ओनली फॉर द वेस्ट। या। Only for the West. अब ये जो इंडिया के लिए जो ट्रेडिंग है उसके लिए रशिया ने दुबई बेंचमार्क को प्रेफर किया है रादर देन वेस्टर्न बेंचमार्क। हम्म। हम्म। exactly हम्म। and the I think Igor Sechin had come to India. हम्म। Igor Sechin is the like the top boss of the Russian giant, the Russian हम्म। oil giant. They had हम्म। come to India and they signed an agreement with Indian Oil Corporation in the presence of what's his name? The Russian energy minister. I am forgetting his Yes. name right now, हाँ, but it's okay. Hardeep Singh Puri was also there, and this Russian energy minister was also there. So they signed an agreement for oil at a certain rate. हम्म। So there is going to be no impact of the oil production cut on डेफिनेटली। Indian prices for द हम्म। Indian on फैक्ट Indian prices. So लास्ट India ईयर, हाँ जी सॉरी, So yeah, India is going to get oil for the rate they were getting at, and I'm हम्म। sure that this kind of arrangements have been worked out with China as well as हम्म। the other countries. हम्म। 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 ट्रू। दोस्तों मुझे लगता है कि इट्स एनफ फॉर द डे। वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ एरियाज टुडे, एंड लेट्स कीप इट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम फॉर नेक्स्ट संडे, इजंट इट? डू यू एग्री? Yes, डेफिनेटली, देयर इज अ या। लॉट टू कम एंड लॉट, देयर इज अ actually लॉट there टू is a बी lot. डिस्कस्ड, So देयर इज अ if लॉट टू if बी this goes डिस्कस्ड। on, we can go on and on and on. Exactly. So एग्जैक्टली, my idea is that basically we continue this every Sunday around 8 o'clock, 9 o'clock, and around this time every Sunday. So week में जो भी updates हैं इस बारे में, that we can present on the Sunday. So keep it in the schedule so that we don't have to distort the whole plan the last minute. definitely, All definitely. right. And just Yeah. one Absolutely. last point, last year I Yeah. had tweeted it that रशिया हैज रशिया के पास एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि गो टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, Mm-hmm. कन्विंस देम, यूज योर डिप्लोमेटिक पावर,
क्योंकि जो क्लासिक डिप्लोमेसी है, क्लासिक डिप्लोमेट्स, आई गेस रशिया इज द ओनली कंट्री हु आर लेफ्ट विद द क्लासिक डिप्लोमेट्स एंड डिप्लोमेसी, who हम्म, know कि करंट सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में लाना है. दे अवॉइड कन्फ्रंटेशन, दे अवॉइड वर्बल कन्फ्रंटेशन. उसके लिए करेक्ट। उन्होंने मेदवेदेव जैसे लोगों को छोड़ रखा हुआ है. कुछ एक दो लोग चाहिए होते हैं धमकी देने के लिए भी. राइट। बट द फैक्ट इज, मैंने उस टाइम लिखा था कि रशिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. दे हैव टू कन्विंस द ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू कट डाउन बैरल्स पर डे. अगर आप 2 से 3 मिलियन करोगे तो जो आपकी ईस्ट की सप्लाई है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, यू कैन इजीली सिक्योर. लेकिन वेस्ट के लिए आप जो मार्केट है वो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक देम बेसिकली पे मोर मनी. एंड बेसिकली या दिस इज द ओनली थिंग दैट रशिया इज ट्राइंग टू डू. या दैट्स राइट, दैट्स राइट। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, एंड बासु भाई, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू स्पेयरिंग सो योर मच फॉर टाइम हैविंग My अस. pleasure. despite your illness, which is, so just take Yeah, yeah, rest yeah, and yeah, yeah. get I well guess, soon. our viewers should know that Basu was not feeling good, but still Yeah, yeah, he. yeah. Thank you, folks. See you soon. Pleasure. Pleasure.